स्विच ऑफ कर दो, लाइट बंद कर देना। अच्छा बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लाइफ साइकिल मॉडल का। ठीक है, लाइफ साइकिल मॉडल अगर आपको याद हो तो हमने मार्केटिंग के अंदर भी, पीआरसी के अंदर भी पढ़ा था ये। द क्लासिकल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, द लाइफ साइकिल इज अ पीरियड फ्रॉम बर्थ और क्रिएशन ऑफ एन आइटम टू द एंड ऑफ इट्स लाइफ। Products, companies and industries all have the life cycle. A product life cycle begins with its initial development and ends up in the time that is eventually withdrawn from the market at the end of his life. Life cycle is said to be through several stages, 4 stages basically. The classical life cycle for a product or even an entire industry goes through 4 stages or phases. Introduction है, growth है, maturity है और उसके बाद बेटा डिक्लाइन है। जितनी भी दुनिया के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, कंपनीज हैं, उन तमाम को बेटा इसके अंदर से गुजरना पड़ता है। अब इंट्रोडक्शन फेज के अंदर क्या होता है? ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देयर इज सम सेल्स डिमांड बट टोटल सेल्स आर वेरी लो। फर्म्स दैट मेक एंड सेल द प्रोडक्ट्स इनकर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एंड स्टार्टअप कॉस्ट एंड रनिंग कॉस्ट आर हाई। द प्रोडक्ट इज नॉट येट प्रॉफिटेबल। यानी कि इंट्रोडक्शन के फेज के अंदर खर्चे ही खर्चे होते हैं। किसी भी कंपनी अगर कंपनी खोलनी है तब भी समझे खर्चे ही खर्चे होंगे, प्रॉफिट नहीं आएगा। अगर कोई प्रोडक्ट है वो भी इसी तरीके से खर्चे ही खर्चे होंगे, मुख्तलिफ किस्म के उसके ऊपर कॉस्ट तो इनकर हो रही होगी और प्रॉफिट आपको नहीं आ रहा होगा। ग्रोथ फेज है। ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज द टोटल सेल्स डिमांड इन द मार्केट ग्रोज एट अ फास्टर रेट। न्यू एंट्रेंट्स आर अट्रैक्टेड into the market by the prospect of the high sales and profits. At an early stage during the growth phase, companies in the market began to earn profit. ठीक है, यहाँ पे फिर अर्ली स्टेज के अंदर जो कंपनीज है वो प्रॉफिट बनाना शुरू हो जाती है। मेच्योरिटी फेज आता है। ड्यूरिंग द मेच्योरिटी फेज टोटल एनुअल सेल्स जो है ना रिमेन फेयरली स्टेबल होती हैं, प्राइसेस एंड प्रॉफिट्स स्टेबल होते हैं। द अपॉर्चुनिटी फॉर मोर ग्रोथ नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अब इसके अंदर मजीद ग्रोथ नहीं हो सकती फिर जब मेच्योरिटी में आप पहुँच जाते हैं। Although the life of the product might be extended through product updates के जरिए, more companies might seek to improve profits by differentiating their products more from those of competitors, selling to the niche market segment के अंदर या heavily advertise के साथ। तो प्रोडक्ट की रीशेपिंग के साथ हम मेच्योरिटी से दोबारा जो है ना ग्रोथ फेज की तरफ जा सकते हैं कुछ अरसे के लिए। अब जैसे कि कोक, अब कोक के पास एक ही प्रोडक्ट है बेटा 125 साल से, तो वो हर साल कोई ना कोई इस तरीके से या 2 साल बाद 4 साल बाद हैवी एडवर्टाइज करते हैं इसके अंदर, ताकि फिर जो यंगर जनरेशन है वो इसके साथ हुक हो जाए और वो लंबे अरसे के लिए उसी यंगर जनरेशन के साथ अपने आप को अटैच रखें। चौथा फेज आता है हमारे प्रोडक्ट के अंदर जिसे हम कहते हैं डिक्लाइन फेज। इवेंचुअली टोटल इन यूर सेल्स इन द मार्केट विल स्टार्ट टू फॉल। एज सेल्स फॉल सो डू द प्रॉफिट्स। This leads to companies leaving the market, which continues until it is no longer possible for any company to turn a profit from the product. When the last supplier exits the market, the product life cycle is complete. और जब उसका सप्लायर लास्ट उसमें से निकल जाता है तो बेटा फिर आपका प्रोडक्ट लाइफ मुकम्मल हो जाता है। बेसिकली आप प्रॉफिट और लॉस जीरो पे चला जाता है, टाइम ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाती है वो प्रोडक्ट। अब जैसे हमारे ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न थे किसी ज़माने के अंदर, वो देख के प्रोडक्ट लाइफ में शुरू में कितना पैसा बनाया, ग्रोथ हुई, मेच्योरिटी हुई, एंड हुई और वो ख़त्म हो गए बेटा टीवी। नॉट ऑल प्रोडक्ट्स हैव अ क्लासिकल लाइफ साइकिल। अनसक्सेसफुल प्रोडक्ट्स नेवर बिकम प्रॉफिटेबल। A business entity might be able to revitalize and redesign a product so that when it enters the decline phase, its sales can be increased again and it goes into another period of a growth and a maturity. जैसे मैंने आपके सामने बेटा कोक की एग्जांपल दी। The length of a product life cycle can be long or short. A broad type of a product such as the motor car has a longer life cycle, and particular types of a product such as the Volkswagen Beetle, Ford, Escort. At each phase of the product life cycle, selling price will be altered, change होगी, cost में भी differ होगी, the amount invested, capital investment vary होगी, और spending on advertising and other marketing activities may change. Example क्या है? The life cycle of a smartphone is relatively short and in some cases even less than a year.
ड्यू टू द रैपिड डेवलपमेंट्स इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हर साल देखें जितनी भी बड़ी आपके सामने इस वक्त मार्केट के अंदर मोबाइल फ़ोन की है कंपनीज, वो हर साल अपना नया मॉडल लेके आती हैं। इसका मतलब है कि नया मॉडल आने से आपका जो पुराना मॉडल है उसकी लाइफ साइकिल जो है ना वो कम हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता करके जो उससे पिछले वो उसकी ख़त्म हो जाती है। Soon after announcing the imminent launch of a new model in their smartphone range, companies like Apple, Samsung, HTC discount the price of their existing model in order to maximize sales and clear the inventory. This attracts the bargain hunters who are happy to purchase old models for a lower price and avoid paying the premium required for the new product. वो फिर bargain hunter वाले बेटा इसके अंदर जो है ना आपके सामने आ जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर फिर हमने और देखना होता है कि कॉस्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लाइफ साइकिल क्या है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कैन बी इम्पोर्टेंट इन न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस एज द कंपनी विल ऑफ कोर्स वांट टू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम द न्यू प्रोडक्ट एंड द टेक्निक कंसिडर्स द टोटल कॉस्ट दैट मस्ट बी रिकवर्ड। These will include research and development costs, a decision made at the development phase, impact later cost, ट्रेनिंग कॉस्ट है, मशीनरी कॉस्ट है आपकी, प्रोडक्शन कॉस्ट है आपकी, डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग कॉस्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट है, वर्किंग कैपिटल कॉस्ट है, रिटायरमेंट और डिस्पोजल कॉस्ट है आपकी। तो ये सारी की सारी कॉस्ट जो है ना ये आपने जहन में रखनी होती है। तो इसके बाद ये सारी रिकवर करने के बाद आपने प्रॉफिट कमाना है। और स्टेज, कौन सी स्टेज में कौन सी कॉस्ट आपको अकर करना पड़ती है बेटा, तो सबसे पहले इसके अंदर आप देखें कि आपकी स्टेज आ जाती है जिसे हम कहते हैं सबसे पहले आ जाती है आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट डेवलप के अंदर जो कॉस्ट है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट होगी और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना आपकी कॉस्ट होगी। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस के आपने जो मशीनरी लगाई है वो कॉस्ट आपको पड़ेगी। दूसरा इंट्रोडक्शन टू मार्केट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आएगी, सेटअप एक्सपेंशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की कॉस्ट आएगी। ग्रोथ के अंदर कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटी, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। मेच्योरिटी में मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी, मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट एनहांसमेंट कॉस्ट फॉर एक्सटेंडेड मेच्योरिटी के लिए होगी। डिक्लाइन के लिए मेंटेनेंस ऑपरेटिंग कॉस्ट टू कीप द सेल्स होगी, और विड्रॉ के लिए एसेट डिकमीशन कॉस्ट होगी, पॉसिबल रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट होगी, रिमेनिंग वारंटीज टू बी सपोर्टेड कॉस्ट होगी। तो ये फिर सारी की सारी मुख्तलिफ किस्म की कॉस्ट आपको देना पड़ेंगी बेटा। अब आ जाता है फिर बेनिफिट्स ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है। ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कंपेयर द रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ओवर इट्स इंटायर लाइफ। दिस हैज द मेनी बेनिफिट। 5 बेनिफिट दे रहा है ये। नंबर 1 दे रहा है द पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी असेस्ड बिफोर मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट इज कैरिड आउट एंड द कॉस्ट incurred. Non-profit making products can be abandoned at an early stage before costs are committed. Techniques can be used to reduce the cost over the life of the product. Or 3, the pricing strategy can be determined before the product enters the production. This may lead to the better control of marketing and distribution cost over. Attention can be focused on reducing the research and development phases to get the product to market as quick as possible. The longer the company can operate without competitors entering the market, the more revenue can be earned and the sooner the product will be reached the break-even point के ऊपर. By monitoring the actual performance of products against plans, lessons can be learned to improve the performance of future products. It may also be possible to improve the estimating techniques used. उसको भी हम टाइम के साथ साथ बेटा ये इसको इम्प्रूव किया जा सकता है एस्टिमेटिंग टेक्निक। रेलेवेंस क्या है जी अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और इसकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट शुड कंसीडर द कैश फ्लोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ओवर इट्स इंटायर लाइफ साइकिल। When the decision is being about whether or not to develop a new product, management should consider the likely sales and the returns over the entire life cycle. For existing products, management need to assess the position of the products in its life cycle and what the future prospects of the product in terms of the profits and the cash returns might be. क्या possibly इसकी बेटा हो सकती है।
टाइमिंग क्या है जी मार्केट एंट्री मार्केट एग्जिट की? द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंसेप्ट माइट हेल्प कंपनीज टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस अबाउट व्हेन टू एंटर द मार्केट एंड व्हेन टू लीव इट. Entrepreneurial companies might look for opportunity to enter a new market during the introductory phases, in the expectation that the product will become successful and company will win a large share of the market by being one of the first companies to enter it. More cautious companies जो होती हैं looking for growth opportunity की might delay their entry into the market until the growth phase when the product is already making a profit for its producers. और तीसरा, कंपनीज आर अनलाइकली टू एंटर द मार्केट ड्यूरिंग द मैच्योरिटी फेज अनलेस दे सी द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द मार्केट और अनलेस द कॉस्ट ऑफ द एंट्री इनटू द मार्केट इज वेरी लो. अ कंपनी माइट नीड टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस about leaving the market when the product is in its decline phase. It should be possible to make profits in a declining market, but better growth opportunities might exist in other market and a company might benefit from the changing in its strategic directions. तो ये आपको इसका जो है फ़ायदा होता है कि आप अगर आप स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को भी चेंज करनी है तो ये भी इसके अंदर आपका हेल्प कर सकता है. लाइफ साइकिल एनालिसिस को भी हम क्योंकि कंपनी का जब एनालिसिस करते हैं इसको टेक्निक फॉर कंपटीशन एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं. लाइफ साइकिल एनालिसिस आल्सो यूजफुल फॉर असेसिंग स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड द नेचर ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, द नंबर ऑफ कंपटीटर्स इन द मार्केट नाउ एंड द नंबर ऑफ कंपटीटर्स दैट माइट एग्जिस्ट इन द फ्यूचर will influence the phase that the product has reached during in its life cycle. अच्छा जी, cycle of competition. Cycle of competition, another concept for understanding the behavior of a competitors in the market. When one company achieves some success in the market, competitors might try to do something even better in order to gain the competitive advantage. A new initiative by one company will result in a countermeasure from another companies. Which company in the market tries to do something different and better. अब ये आपको जब आप मार्केट का एनालिसिस करेंगे साइकिल का तो वहाँ से फिर आपको आइडिया होगा, फिर उसके मुताबिक फिर आप अपने अंदर जो चेंजेस लाना चाहते हो लेके आएंगे. A typical cycle of competition affect prices inequality. If one company has a large share of a profitable market, a rival company might start to sell its product at a lower price. जैसे देखिए बाद दफ़ा आप देखिए कोक और पेप्सी के अंदर कंपटीशन होता है. आप कोक के पास ज़्यादा मार्केट का शेयर है तो देखेंगे कि फिर कुछ अर्से के लिए अपना पेप्सी अपनी प्राइस को कम करता है, लेकिन फौरी तौर के रिएक्शन के तौर पर वो कोक उसकी प्राइस को मैच कर देता है. अगर वो मैच ना करे तो मार्केट का शेयर लूज़ करेगा, अगर वो मैच कर देता है तो कम से कम ये उसे बेनिफिट के मार्केट का शेयर लूज़ नहीं करेगा. Another rival company might improve the quality of its product but sell it at the same price as rival in the market. The first company might respond to the initiative by its rivals by improving this product quality and reducing the selling price. The effect of the cycle of a competition in growing market is that the prices fall and the quality might improve. In the maturity phase of the product life cycle or in the decline phase, it becomes more difficult to lower prices without reducing the quality. Competitors might try to gain a bigger share of the market by selling at a lower price, but the product quality might be reduced. This can lead to the spiral of falling pricing and the falling quality to the point where the product is no longer profitable and it is less attractive to the customer. फिर वो customer भी छोड़ देंगे और company भी बनाना छोड़ देगी. The concept of the cycle of a competition is useful for strategic analysis because it can help to explain the strategies of companies in the market and to assess what future initiative by competitors might be. तो उससे फिर आपको ये होता है कि इसका क्या हो सकता है, समझे ना. मेरा मकसद कहते हैं कि अब ये सारा काम हमने करना तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इसको देखेंगे कि इसके अंदर हम क्या कुछ कर सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए. ठीक है जी. तो अभी एग्जाम्पल दे रहा है इसके अंदर बेटा. एग्जाम्पल क्या दे रहा है लाइफ साइकिल को समझाने के लिए हमें. ग्लोरी इज अ सीरीज ऑफ हाई एंड स्मार्टफोन है एंड टैबलेट डिजाइन मैन्युफैक्चर एंड मार्केटेड बाय द मार्वल ग्रुप एमजी ग्रुप. एमजी इज हाईली रिगार्डेड फॉर इनोवेशन प्रोडक्ट डिजाइन एंड एग्रेसिव मार्केटिंग कंपोनेंट के लिए. द मोबाइल फोन इंडस्ट्री इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी where a number of competitors attempt to outperform each other in terms of a product design, features and pricing. MG
is in the process of introducing the new series of foldable smartphone Glory Ultimate that could be vital breakthrough in mobile phone industry. The management of MG intends to adopt life cycle costing for Glory Ultimate. ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल के अंदर क्या है जी, आप हमें रिक्वायर्ड required to discuss the benefit of MG that enjoy the adopting life cycle costing. To list the cost of MG might have incur in each phase or suggest the strategies for MG may adopt to extend the maturity phase के लिए. इसका सोल्यूशन जब आप टैकल करेंगे, एक का जवाब है MG में enjoy the following benefit by adopting the life cycle costing. तीन बेनिफिट है. The potential profitability of Glory Ultimate would be assessed before the major development is carried out and the further costs are committed. It may assist management in deciding whether to introduce the new series at all or not. Second, it may assist in identifying various types of a cost over the life of Ultimate Glory. Strategies may then be devised to reduce or control these costs. It may assist in developing a pricing strategy that would cover the cost and achieve the desired level of a profit. अच्छा, बी का जवाब होगा MG might have to occur in following cost phases के अंदर. इंट्रोडक्टरी में मैनेजमेंट कॉस्ट होगी, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट होगी बेटा, और कॉस्ट ऑफ द सेटिंग और एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगी. सेकंड जो ग्रोथ फेज है ग्लोरी का, उसके अंदर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ द मार्केटिंग कैपिटल करना पड़ेगा इसे, कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटी होगी, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट रेज करना पड़ेगी इसे. मैच्योरिटी में कॉस्ट टू मेंटेन मैन्युफैक्चरिंग होगी, मार्केटिंग प्रोडक्ट एनहांसमेंट और कॉस्ट एक्सटेंड होगी, और डिक्लाइन में कॉस्ट टू विड्रॉल होगी, और डिस्काउंट्स द अट्रैक्ट्स कस्टमर देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा हेवीली. और पार्ट सी को टैकल करने के लिए मे अडॉप्ट एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज के डिफरेंशिएट बाय मॉडिफाइंग डिजाइन, फीचरिंग, पैकेजिंग और एक्सटेंड करें, डिफरेंशिएट करें अपनी प्रोडक्ट को. सेल और अनटेप्ड मार्केट्स इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया या जेंडर टाइप्स ऑफ कस्टमर को अट्रैक्ट करें. रिविजिट करें प्राइसिंग स्ट्रेटजी को, ऑफरिंग डिस्काउंट्स एंड प्रमोशनल स्कीम्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स हु आर हैप्पी टू परचेज द ओल्ड मॉडल्स फॉर द लोअर प्राइस एंड अवॉइड द पेइंग द प्रीमियम रिक्वायर्ड फॉर द न्यू मॉडल्स. तो उनको फिर अट्रैक्ट करके इसको अपने डिक्लाइन फेज के अंदर जो इन्हें हेल्प लेना पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर ये फंस जाएंगे बेटा इसके अंदर. अच्छा जी, फिर इसके अंदर हमारा स्ट्रेटेजी ग्रुप्स और मार्केट की सेगमेंटेशन है कि स्ट्रेटेजी ग्रुप्स और मार्केट सेगमेंटेशन कैसे की जाती है. स्ट्रेटेजी ग्रुप्स से क्या मुराद है? अनदर अप्रोच टू एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कंपटीटर्स इन मार्केट इज टू ग्रुप देम इनटू स्ट्रेटेजी ग्रुप्स, कि उसको स्ट्रेटेजी ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करते थे. अच्छा जी, a strategy group is a number of entities that operate in the same industry and that have similar strategies, so that they are competing in their markets in a similar way. Strategy groups have been defined as cluster of firms within the industry that have common specific asset and thus follow the common strategies in key decision variable के लिए वो common strategies को इनको follow करना पड़ता है. Example है bottles of the soft drink. There are many companies in the industry for making and selling bottled soft drinks. To facilitate the competitor analysis, they can be grouped into the following strategy groups. All the companies in each group promote their brand image, so all the products are branded. 5 चीज़ों में ये strategy group की तरफ जा सकते हैं. Number 1, companies that operate globally and make and sell a broad range of different bottled soft drinks, Coke and Pepsi. Companies that operate regionally, for example, Asia only, and make and sell a broad range of different bottles of drink. Companies that operate in the national market and make and sell a broad range of different soft drinks. Companies that operate internationally but not offer relatively limited range of soft drinks, or local specialists that make the small range of products of the local market. ठीक है, औरा वाटर हो गया थाईलैंड के अंदर, हमारे यहाँ सूफी वाले हो गए बेटा पाकिस्तान के अंदर, यहाँ के गोरबे वाले हो गए, तो वो फिर इसकी 5वीं कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं. The strategies for all companies in a strategy group will be similar. When there are only a few competitors in the same industry, the concept of strategy groups has no practical value. ठीक है,
because each competitor can be analyzed individually. However, when there are the many competitors in the industry, it can simplify the analysis to put them into strategic groups of entities with similar resources, similar strategies. For the purpose of competitor analysis, all the entities in the same strategic group can then be treated as if they are a single competitor. Instead of analyzing each competitor individually, they can be analyzed collectively in a group. अब जैसे हम सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहे थे, हमें पता है कोक के पास तकरीबन 56-57% मार्केट का शेयर मौजूद है, तो इसका मतलब बाकी जितनी भी है अब उनके पास 46 या 40% का शेयर मौजूद है। तो वो ग्रुप में करने से हमें कंपैरिजन करने के अंदर बड़ी आसानी हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर एग्जांपल आती है, कंपनीज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री माइट बी ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज। 3 स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स माइट बी आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम इसके अंदर बेटा। अच्छा, वो कौन से हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कंपनीज दैट सीक टू मेंटेन देयर पोजीशन इन द मार्केट, companies that seek to innovate and develop the new products, or companies that consider market to be the key strategic success. The strategic priorities of the companies in each group might differ as follows. Priority 1 है cost reduction, maintain market position के अंदर क्या करेंगे? वो cost reduce करेंगे। Innovator क्या करेगा? consistently quality को improvement करेगा। Market based strategies क्या होंगी? consistent quality होगी। प्रायोरिटी नंबर 2 होगी शॉर्ट लेड टाइम फॉर डिलीवरी, और उसमें इनोवेटर्स क्या करेंगे? रैपिड अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन चेंज की तरफ जाएंगे, और जो मार्केट बेस्ड स्ट्रेटजी होंगे डिपेंडेबल जो होगा वो डिलीवरी के ऊपर कहेगा हमारा डिलीवरी का सिस्टम कैसा है बेटा। तीसरा इसके अंदर जब हम जाएंगे कंसिस्टेंट क्वालिटी होगी हमारी, मेंटेन द मार्केट पोजीशन के लिए, डिपेंडेबल डिलीवरी होगा इनोवेटर्स के लिए, और कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगी हमारी मार्केटिंग का। चौथी स्टेज में हम डिपेंडेबल डिलीवरी पे जाएंगे, इम्प्रूव प्रोडक्ट परफॉर्मेंस होगी इनोवेटर्स के लिए, और शॉर्ट लेड टाइम होगा डिलीवरी के लिए। ये मेंटेन करने के लिए स्ट्रेटजीज को नोट। अ लीड टाइम इज अ टाइम बिटवीन कस्टमर प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड delivering the product to the customer. When the strategic objective is a short lead time, the aim is to deliver the product as quickly as possible after the customer has ordered it. Dependable delivery means being able to state when and where the product will be delivered to the customers and meeting this promise. The main concern of all manufacturer companies are broadly similar, but their priorities different. This means that their strategies are likely to be different as companies in each strategic group pursue their own priorities. तो इसको अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो उसकी एग्जांपल को हम इस तरीके से जो ना कंपटीशन के लिए जो ना डील करेंगे बेटा। फिर आपकी एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक स्पेस मॉडल आता है। When all companies in an industry are put into the strategic groups, these groups are analyzed, a strategic space might become apparent. A strategic space is a gap in the market that is not currently filled by any strategic group. The existence of a strategic space might provide an opportunity for a company to make a strategic initiative and attempt to fill the space that no other rivals occupy at a moment. Price versus quantity. One way of identifying the strategic group within the entire market is to classify the market position in the terms of the price and quality. Some firms will offer lower price products, but their quality is probably not as good. Other firms might offer higher quality products for the higher price. The strategic groups in the market might be mapped according to the price quality as follows. अब इन्होंने इसके अंदर भी बड़े 4 ग्रुप बनाए, ठीक है। प्राइस लो ग्रुप 1 की, क्वालिटी भी लो, फिर ग्रुप 2 से बेहतर, 3 से 4 उससे ऊपर आ जाएगा, जिसकी प्राइस भी हाई होगी, क्वालिटी भी हाई होगी। अब अगर इसको स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के अगर सॉफ्ट ड्रिंक की इंडस्ट्री में मैं देखूँ तो मुझे गोरमे और नेक्स्ट कोला ग्रुप 1 में नज़र आएगा, ठीक है। और फिर समझ लें कि आपके ग्रुप 2 के अंदर जो बाकी आपके जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इन्हीं दुकानों से मिलते हैं, कोई लेमन कोला हो गया या दूसरे हो गए, उनकी प्राइस उससे बेहतर होगी, क्वालिटी भी स्लाइटली बेहतर होगी। फिर थर्ड ग्रुप आ जाएगा। फोर्थ ग्रुप के अंदर मुझे और आपको कोक और पेप्सी ही नज़र आते हैं, जिनकी प्राइस भी सबसे हाई होती है बेटा और जिनकी क्वालिटी भी सबसे बेहतर होती है। दिस में इंडिकेट दैट देयर आर 4 स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स each in a different market position in relation to the price and quality. The largest group is group 2, sells product with a middle range price and the middle range quality.
This method of analysis can help an entity to identify the possible gaps in the market. A strategic space, when there is a perceived gap in the market, an entity might decide on a strategy to fill in the empty space by offering a product with the characteristics that are needed to fill the gap. If the positioning of entities of the market analyzed by price and quality as above, possible strategic space might be identified as follows. ग्रुप 1 के बाद strategic space आ रहा है, ग्रुप के बाद आ रहा है 3, 4, 4, 4 के बाद भी आ रहा है. तो ये आप देखेंगे strategic ग्रुप मौजूद हैं जहां आप बेहतर क्वालिटी के साथ, लो क्वालिटी लो प्राइस के साथ, लो प्राइस बेहतर क्वालिटी के साथ और हाई प्राइस हाई क्वालिटी के साथ जो है ना आप इसको टैकल कर सकते हो. इन दिस एग्जांपल, एन एंटिटी might decide to target a position in the market where it sells a high quality product for a low price. Because there are no firms yet in this part of the market, alternatively there might be a market for even the higher quality products at an even higher price. The entity might even decide to fill the gap between group 1 and group 2. तो उसके अंदर फिर आपके पास गैप मौजूद है. अगर कोई नया बंदा उसमें एंट्री चाहता है तो अपने कारोबार को उस तरह का बना के खोल सकता है. तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है. A market can be identified as a group of customers or a potential customer for a particular product or a range of related products. In a very small number of markets, all suppliers provide the identical product that is the same in every respect to the product supplied by the competitors. An example is a foreign exchange. Banks selling US dollar in the exchange for the euros, or all trading exactly at the same product and maybe at the same rate as well. In most markets, products are differentiated in various ways. They are similar, but there are also noticeable differences. Differences in the product include differences in product device, design, price, branding. Product might also differentiated by the way in which they are delivered to the customer. For example, banking service might be delivered through a branch network or as an internet service. Similarly, consumers can buy products in shop or through the internet, or they can buy a hot meal by going to the cafeteria, restaurants, or by ordering the home delivery meal. Business entities often use differentiation to make their products attractive to the customers in the market, so that customers will buy their products rather than those of your competitors. तो फिर इसके अंदर प्रोडक्ट डिफरेंशिएट के अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी आएंगी जैसे जैसे आप इसके अंदर सोचते जाएंगे, क्योंकि वहाँ मार्केट है ना बेटा. मार्केट के अंदर डिफरेंशिएट, अब जैसे बहुत सारे लोग मुसलमान होने का भी फ़ायदा उठाते हैं बैरूनी मार्केट्स के अंदर, कि अब वहाँ पे भी देखें ना चिकन. अब अगर एक गोरा चिकन बेच रहा है उसे तो हलाल हराम का नहीं पता होगा, तो वो 1 पाउंड का चिकन दे रहा है. और अगर कोई पाकिस्तानी वहाँ कोई चिकन बेच रहा है तो उसने हलाल का लेबल लगाया हुआ होगा और वही चिकन वो 2 पाउंड में बेच रहा है, ऑलमोस्ट डबल द प्राइस के ऊपर बेच रहा है. तो वो डिफरेंशिएशन है. तो आपको देखना पड़ता है कि फिर किस मार्केट के अंदर किस डिमांड के तहत आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेचते हो. A business entity might try to sell its products to the all customers in the market. सारे कस्टमर को भी बेच सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरर ऑफ द शुगर might try to sell their product or products to the all customers in the market who buy sugar. Similarly, distributors of petrol might try to sell their products to the all car drivers, buyers of petrol. However, a business entity might choose instead to target its product at a particular section or segment of the market. A market segment is the section of the total market in which the potential customers have certain unique and identifiable characteristics and needs. अब देखो पेट्रोल है, पेट्रोल के अंदर आप देखिए यूरो 5. अब कुछ लोग तो हैं ना जो यूरो 5 को इस्तेमाल करते हैं. तो अगर ये यूरो 5 हर पेट्रोल पंप के ऊपर दस्तयाब ना हो और उसके लिए अलग से पेट्रोल पंप बन जाए तो वो भी अपनी मार्केट की सेगमेंट कर लेगा, वो भी उसमें से लोग तोड़ लेगा. Instead of trying to sell all customers in the entire market, an entity might develop products or services that are designed to appeal to the customers in the specific market segment. Market segmentation is the process of dividing the market into the separate segments for the purpose of developing the different products for the each segment. Examples इसकी दे रहा है cars. The market for motor cars might be segmented according to the design of the car.
For example, 4-door or 2-door family saloon car without hatchback and with different engine sizes. अब एक ये होगा है तो कार ही 2-सीटर स्पोर्ट्स कार्स हो गई, स्टेट कार्स हो गई, पीपल कैरियर्स हो गए, 4x4 व्हीकल हो गए, इलेक्ट्रिक पावर्ड कार्स हो गई, कार्स दैट कैन बी पावर्ड बाय द एथेनॉल बायोफ्यूल के जरिए हो गई। अब है ये सारी की सारी कार, लेकिन हर एक कार की अपनी अपनी मार्केट है। फॉर कार डीलर्स द मार्केट for cars can also be segmented into the new car market and the used car markets. Each type of a car design intended to appeal to the needs of the different segment of the car buyers. अच्छा, मेथड कौन सा जी सेगमेंट करने का मार्केट को? मार्केट सेगमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर 2 मेन रीजंस के लिए। It provides the basis for analyzing competition in a market or industry. Number 2, it provides basis for framework for making the strategic choices. There are various ways of segmenting the market and identify different groups of a customer's methods of something the market includes segmentation by geographical area wise आप segment कर सकते हो, quality and performance wise segment कर सकते हो, function wise. For example, within the market for footwear, there are market segment of running shoes हैं, football shoes हैं, hiking shoes हैं, riding shoes हैं, snow shoes हैं, and so on. टाइप ऑफ कस्टमर के मुताबिक भी आप मार्केट सेगमेंट कर सकते हो। कंज्यूमर्स हैं, कमर्शियल हैं, सोशल स्टेटस और सोशल ग्रुप के मुताबिक भी आप कर सकते हो। एज, अडल्ट, टीनेजर, यंगर चिल्ड्रन माइट बी बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स सच एज कंप्यूटर गेम्स, म्यूजिक डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट। फिर लाइफ स्टाइल के मुताबिक भी आप इसको कर सकते हो। तो ये समझो कि सोचो जो हमारी डेमोग्राफिक होती है ना, उसके मुताबिक आप अपने आप को मार्केट तलाश करके और उस मार्केट को सर्व करके आप पैसा बना सकते हो। सोशियो डेमोग्राफिक एग्जाम्पल, द एंटिटी माइट डिसाइड टू सेगमेंट अ मार्केट अकॉर्डिंग टू द लाइफ स्टाइल ऑफ अ कस्टमर्स। पॉसिबल लाइफ स्टाइल सेगमेंट्स इंक्लूड द सिंगल पीपल अंडर 30 years ऑफ एज, कितने न्यूली मैरिड कपल्स विद नो चिल्ड्रन, married couples with young children, married couples with teenage children, married couples whose children are grown up and have left home, retired couples, retired single people. The form of the market segmentation can be useful for certain products and services, holidays, motor cars, some food and drink products, entertainment products. ये इसके लिए फिर आपको ये सारा कुछ करना पड़ेगा बेटा। अच्छा जी, मार्केट सेगमेंटेशन एंड स्ट्रेटेजिक स्पेस, इसमें कैसे हम करते हैं? A similar analysis of strategic group can be made to identify possible target market segment in the example below. The strategic groups are analyzed by lifestyle of a customer. अब ये हमने जो segmentation की है लाइफ स्टाइल पे की है। देखिए सेल्स यंग और सिंगल्स की आप देख लें कि लाइफ स्टाइल, ठीक है जी। फिर आप यंग और मैरिड, मैरिड और यंग, मैरिड और आपका ओल्डर चिल्ड्रन, मैरिड चिल्ड्रन लेफ्ट होम, वो भी मार्केट है आपकी। रिटायर्ड पीपल है, सिंगल रिटायर्ड ओल्डर पीपल है। तो ये सारे के सारे आपकी मुख्तलिफ किस्म की सेगमेंट मौजूद है। दिस एनालिसिस सजेस्ट दैट देयर आर पॉसिबल गैप्स इन द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट एंड दैट अ प्रोडक्ट इज नॉट करंटली बीइंग मेड एंड सोल्ड दैट माइट अपील स्पेसिफिकली टू इंडिविजुअल whose children have left home or to individuals who have retired from the working. Having analyzed the market and identified those strategic spaces, management can go on to assess whether a strategy based on developing an amended product specifically for these gaps in the market might be strategically desirable or financially worthwhile. Identifying gaps in the market can be a particularly useful method for competition analysis for companies that are considering whether or not to enter into the market for the first time. तो फिर अगेन रिस्क तो होगा अगर कोई ऐसी मार्केट के अंदर जाता है, लेकिन क्या वो रिस्क पे ऑफ भी होता है या नहीं होता? ठीक है बेटा, ये फिर इसके अंदर सोचने वाली बात होती है। अच्छा, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं BCG मैट्रिक्स का हम नाम देते हैं, तो BCG या बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG मैट्रिक्स है। और ये इसके अंदर समझ लें कि आपके जो 4 खाने होते हैं, ये वैसे मैं ना आपके साथ अभी BCG मैट्रिक्स जो है ना मैं आपके साथ व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर कर रहा हूँ। एक चीज़ ज़रा काइंडली आप उसको देखना है।
वैसे तो ये हम मकसद में क्लास के अंदर आपके सामने जो है ना कर चुका था, एक दफ़ा डिस्कस हमने थोड़ा सा मैंने किया था बीसीजी मैट्रिक्स को भी, लेकिन अब ये ज़रा थोड़ा सा डिटेल के साथ, क्योंकि ये आप लोगों के लिए करना जो है ना ये वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बीसीजी मैट्रिक्स का, और इसके करने का जो है ना आपको बेनिफिट भी बहुत ही ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा आपको इसका जो है ना बेनिफिट भी मिल जाता है आपका कि किस तरीके से आपने इसको देखना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है, आप देखें कि कैश जनरेशन है, हाई लो है, कैश यूज, अब ये कैश कितने लोग यूज़ कर रहे हैं ये इसके ऊपर बना हुआ है। तो आपका जो है जो क्वेश्चन मार्क है वो आपका नया एरिया होता है, नई प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, फिर आपकी जो स्टार है उसके अंदर ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट बनती है और बिकना शुरू हो जाती है, फिर वही आपकी कैश काउ के अंदर आपकी जो है ना कन्वर्ट हो जाती है, और फिर वो डॉग बन जाती है। डॉग का मतलब है कि उसे जो है ना हमें मार्केट से फिर निकालना पड़ जाता है। डॉग मीन्स एक्चुअली हम उसे कंसीडर करते हैं इसे डेड। The Boston Consultant Group developed a product matrix portfolio for strategic planning. It allows the strategic planners to select the optimal strategy for individual products or business units, while also ensuring that the selected strategies for individual units are consistent with the overall corporate objective. The objective of the matrix is to assist with the allocation of funds to the different products or different units. Matrix is a 2x2 matrix. One side of the matrix represents the rate of the market growth for a particular product or business unit. The other side of the matrix represents the market share that is held by the product or its business unit. Matrix market growth देखते हैं हम, the midpoint of the growth side of the matrix is often set at 10% per year. If market growth is higher than this, it is a high, and annual growth is low. It is low. It should be said that the 10% is an arbitrary figure, or market share usually measured as the annual sales of the particular product or a business unit as the proportion of the total annual market sale. Total market sale कितनी है उसमें से हमारा पोर्शन क्या है। For example, if the product of entity X has annual sales 1 lakh, the total annual sales for the market as a whole is the 10 lakh. So entity X has a 10% market share. In the BCG matrix, however, market share is measured as annual sales for the product as the percentage of a ratio of the annual sales of the biggest competitor in the market. The midpoint of this side of a matrix represents a situation where the sales for the firm's products or businesses unit are equal to the annual sales of the biggest competitor. If a product or a business unit is the market leader, it has a high relative market share. If a product is not the market leader, its relative market share is low consider होगा. The BCG matrix is shown as follows. The individual products or business units of the firm can be plotted on the matrix as a circle. The size of the circle shows the relative money value for the sales of the product. A large circle before the represents the product of the large annual sale. इसमें कौन सी हो रही है देखें। अब ये BCG मैट्रिक्स बना, वो मैंने आपको भेजी, ये भी देखें। अब इसके अंदर क्वेश्चन मार्क के अंदर देखें, अब जितना बड़ा सर्कल है ना उसका पोर्शन उतना ही लार्ज है उसके अंदर। स्टार देखें क्योंकि मार्केट ग्रोथ और रिलेटिव मार्केट शेयर है आपका। डॉग है, मार्केट के अंदर कितने डॉग्स हैं, छोटा है बड़ा आपके पास, ये जो है ये आपका मार्केट शेयर एक्चुअली कितना है। आपके जो डॉग्स प्रोडक्ट हो रही हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है दूसरे लफ्ज़ों में, ठीक है। The products or business units are categorized according to which the 4 quadrant it is. The 4 categories of a product or the business units are question mark, also called the problem child, और इसको हम न्यू प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। स्टार हो गया, कैश काउ हो गया और डॉग हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन मार्क is a product with a relatively low market share in the high growth market. Since the market is growing quickly, there is an opportunity to increase the market share, but initially it will require a substantial investment of cash to increase or even maintain the market share. यानी कि वही जो आपका इंट्रोडक्शन की फेज में होता है। A strategic decision that need to be taken is whether to invest more heavily to increase the market share in the growth market, whether to seek a profitable position in the market but not as a market leader, or whether to withdraw from the market because of the cash flows from the products are negative. The BCG analysis states that a firm cannot last long with a small market share, as the bigger companies will be able to apply great cost
and price pressure as they enjoy becomes the scale. वो दूसरे जो आपके competitors हैं वो आपको solve कर जाएंगे, खा जाएंगे. स्टार है, स्टार is a high relative market share, high growth market होती है. It is a market leader. However, a considerable investment of a cash is still required to maintain its leading position. Initially, they probably use up more cash than they earn, and the best are cash neutral. Over time, stars should be gradually become self-financing. At some stage in the future, they should start to earn the high returns. फिर तीसरी आ जाती है इसके अंदर जिसे हम कहते हैं कैश काउ. और कैश काउ इज अ प्रोडक्ट इन द मार्केट वेयर मार्केट ग्रोथ इज लोअर एंड पॉसिबली इवन नेगेटिव. It has the high relative market share and it's a market leader. It should be earning substantial net cash inflows because it has the high economies of scale and will have become efficient through experience. Other companies will not mount an attack as they perceive that the market is old and near to decline. तो उसके अंदर वो आपके साथ मुकाबला नहीं करेंगे. Cash cows should be providing the business entity with the cash that is needed to invest in the question marks and stars. चौथा जो क्वाड्रेंट होता है उसे हम कहते हैं बेटा डॉग. The dog is a product in a low growth market that is not the market leader. It is unlikely that the product will gain a larger market share because the market leader will defend the position of its cash cow. A dog might be losing money and using up more cash than it earns. If so, it should be evaluated for the potential closure. However, a dog may be providing positive cash flows although the entity has a relative small market share in a low growth market or declining market. The product may be profitable. A strategic decision for the entity may be to choose between immediate withdrawal from the market करना है आपने या enjoy the cash flows for the few more years before eventually withdrawing from the market करना है. It would be an unwise decision, however, to invest more capital in dogs in the hope of increasing the market share and providing the cash flows, because gaining market share in the low growth market is very difficult to achieve. नहीं होता. से वो प्रोडक्ट मर रही होती है ना, लोग इंटरेस्टेड नहीं होते तो उसमें मार्केट शेयर बढ़ा नहीं सकते. जैसे अब आज आपको के नोकिया 3310 तो ख़त्म हो गई ना, प्रोडक्ट डेड हो गई, तो अब आप उसको रीलॉन्च करो, जो मर्जी करो. कंपनीज मस्ट इन्वेस्ट इन प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस यूनिट्स फॉर द फ्यूचर. दे नीड टू इन्वेस्ट इन सम क्वेश्चन मार्क्स एज वेल एज स्टार्स and this uses up your cash. Much of the cash for investing in other products will come from cash cows. The BCG matrix model can help management to decide on a portfolio of products or business units for both short and the longer term return के लिए बेटा. Low market growth, high market share, cash cow और strategy defend the maintain market share करें, spending on innovation करें. The cash generated by cash cow can be used, यहाँ पे हो सकता है. और हाई मार्केट ग्रोथ और लो मार्केट शेयर के लिए क्वेश्चन मार्क के हमारे स्ट्रेटजी क्या होगा. द प्रोडक्ट विल नीड अ लॉट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट टू इंक्रीज द मार्केट शेयर. द स्ट्रेटजी चॉइस बिटवीन इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ कैश टू बूस्ट द मार्केट शेयर आर टू डिसइन्वेस्ट, अबेंडन द प्रोडक्ट होगा यहाँ पे. हाई मार्केट ग्रोथ, हाई मार्केट शेयर के लिए आपके पास स्टार होता है. स्टार्स आर द कैश काउज है. The entity should make a star product aggressively to maintain or increase the market share. A large continuing investment in the new equipment R&D will probably be needed. Star should be some stage generate enough cash to be the self-sustained, जिसके अंदर हम कहते हैं हो सके. Until then, the cash from cash cows can finance and development. Low market growth और low market share के लिए dog है. They might generate some cash for the business and if they do, it might be too early to abandon the product. The product has a limited future and strategic decision should focus on its short-term future. There is a danger that the product will use up cash if the firm chooses to spend money to preserve the market share. The firm should avoid the risky investment aimed at trying to turn the business around. अच्छा जी, फिर एग्जांपल ये दे रहा है बीसीजी की. अ कंपनी प्रोड्यूस द डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सेल ईच प्रोडक्ट इन द डिफरेंट मार्केट्स. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. ईयर 1 के अंदर क्या है, लास्ट ईयर क्या हुआ, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, ईयर 2 के अंदर
क्या ये टोटल मार्केट साइज ये है, प्रोडक्ट 1 की सेल ये है, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4 की सेल ये हो रही है, ये सारे का सारा डाटा आपको दिया हुआ है। ठीक है जी, प्रोडक्ट 5, 6 तक आया। मार्केट शेयर ऑफ द मार्केट लीडर ऑफ द कंपनी क्या है, प्रोडक्ट 1 का 30% है, 37 है, जो भी मार्केट लीडर है। ठीक है, प्रोडक्ट 2 का 26 है, प्रोडक्ट 3 का 12 है, प्रोडक्ट 4 का 29 है, और प्रोडक्ट 5 का 20 है। तो उस मार्केट के अंदर शेयर बहुत सारा मौजूद है। Using the BCG matrix model, should each of these products are classified, ये might be analysis the gap management and the strategic decision क्या होगा इसका। तो आंसर ये है कि स्टार is a product in the market that grows quickly, where the company's product has a large market share or where the market share is increasing. Product 3 appears to be star. The total market is expected to be double in size between year 2 and year plus 2. The expected market share is in 2 years is 15% compared with 7.5 in the year -2. ठीक है, the market share in the current year is 13%, which makes it the current market leader. कैश काउ के अंदर कौन सी प्रोडक्ट है, ये इसके अंदर हम देख सकते हैं बेटा कि इज अ प्रोडक्ट इन अ मार्केट दैट हैज लिटिल और नो ग्रोथ. द मार्केट शेयर however is normally quite high and the product is therefore able to contribute sustainable to operations cash flows. Product 2 appears to be a cash cow in the current year. Its market share कितना जी, was over 53% and its market leader है. Dog is a product in a market with no growth, कोई ग्रोथ नहीं है. ठीक है जी, और वो बता रहा है कि आपकी प्रोडक्ट 4 है जिसका आपका 3% आपका जो मार्केट शेयर बनता है. दिस इज मच लेस देन द 29% ऑफ द मार्केट शेयर. क्वेश्चन मार्क के प्रोडक्ट विद फेयरली लो मार्केट शेयर होता है, लेकिन इसके अंदर ग्रोइंग का पोटेंशियल होता है. प्रोडक्ट 1 अपीयर्स टू द क्वेश्चन मार्क, द टोटल मार्केट ग्रोइंग quite quickly, but the market share of product 1 is about 4% and this is not expected to change. The product 5 also appears to be the question mark in the same reason. तो ये इस तरीके से बेटा फिर आपने इसको जो है ना हल करना होता है बेसिकली. ठीक है जी, तो इसको इंशाल्लाह फिर हम कल देखेंगे. यहाँ से लेके आपका जो है बेसिकली वीकनेस क्या है आपके बीसीजी मॉडल के अंदर. ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि इसके अंदर कोई आपके साथ चीज़ें भी शेयर करूँ आज. ठीक है जी, ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच और इंशाल्लाह टॉक टू यू टुमारो. अल्लाह हाफिज़.